गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, visible. ठीक है ना, एक सेट दिख रहा होगा. सो लास्ट टाइम वी डिड 3 वेरिएबल वाला सेट व्हिच वाज वेरी वेरी इजी इफ वी नो मोस्ट ऑफ द एरियाज, राइट? तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. आई गिव यू जस्ट 5 minutes टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है, नथिंग इज मिसिंग. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द वेन डायग्राम, पुट द वैल्यूज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, तो थोड़ा सा एक वार्म अप जैसा भी हो जाएगा. किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वी कैन डिस्कस दैट एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चंस जो कैट में आते हैं. ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके पहले थोड़ा 10-15 मिनट के एक अलग चीज मैं डिस्कस करूंगा, जो मुझे लग रहा है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट कंसेप्ट, दैट आई वुड से दैट मेथड. Once you have understood the method, then definitely you can attempt the sets or during the explanation you will understand those. ठीक है, चलो 5 minutes का टाइम है, इसको फटाफट अटेम्प्ट करके आंसर्स बताइए.
चलिए भी सॉल्व करें. आई एम गेटिंग सम आंसर. ठीक है, विल चेक. Very simple, everything is given. In fact, the most important thing which I told you in the last session is the overlapping area. ठीक है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो obviously we can find all other values. ठीक. Can you please confirm that I have captured the correct values? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना? आई थिंक 135 इंडिया का है, इसका T, this is वर्ल्ड. 42 for these two, 48 for T and W. ठीक है, and 43 और 30. ठीक है. So obviously the sum of these two is 42, this is 30, so obviously this will be 12. Similarly, this will be what? 18, and this will be 13, right? Now we can figure out these three values, right? एक एक करके बताते जाइए क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे. What value you will be getting? Only business India कितना आएगा? 135 में से माइनस कर दो सभी को. ठीक है, 135 में से the sum of all these three if you deduct will be getting 80 as I'm getting from some of you. ठीक है. Similarly, this value 65 and this value 54. कंफर्म है? सबका यही आ रहा है? अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, बिकॉज ऑल द एरियाज इज नोन. ठीक. क्या बोल रहा है ये? हाउ मेनी रिस्पॉन्डेड रीड एग्जैक्टली वन मैक्सिम. So obviously it will be the sum of these three values, which is what? Sum of these two is what? 109 and 80. नहीं sorry, 119 plus 80 आएगा 199. 199 आंसर हो गया. Exactly two मैक्सिम. Sum of all these three. ठीक है. So it will be 12 plus 18 plus 13. कितना आएगा? How much? 43. ठीक है ना? 43 the answer for next. Third, business India or business world. Business world is this, business India is this. That means we have to add all these six values. ये और ये. All these six values are coming under business India or business world. Fine. So what we can do is that the total of this is 135. Then we have to add 18 and 54. So answer should be what? 135 plus 18 and 54. Whatever it comes. ठीक है. कितना आ रहा है? अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? 207, 218 अलग अलग क्यों आ रहा है? Is there spelling mistake or you're misunderstanding the question? Ritisha, why are you getting 207? We have to add 6 values. Are you skipping these two? ऐसा तो नहीं है. इनको छोड़ रहे हो, इनको ऐड कर रहे हो. ये टोटल कितना आ रहा है? आई थिंक 218 नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से. कितना ऐड कर रहे हो आप? 65 क्यों ऐड कर रहे हो? Why 65 is added? Why 65? India or world? So if this is for India, this would be for world. For example, right? This is for India and this is for world. So I have to add all these. Only India is how much? 80. Both India and world is what? 13 plus 30, which is 43. And only world is what? 54. So I have to add these numbers. Huh? इन नंबर्स को ऐड करना है. ठीक. कितना आएगा वो? नहीं सॉरी, एक मिनट गलत कर रहा हूं मैं. These two is 43. This value is what? 80 plus 12. 80 plus 12 is 92. And this value is 54 plus 18. ठीक है. तो ये 72 होगा. ऐसा होगा. This thing has to be added. और मीन्स व्हाट? अब देखो, जब दो सेट को सॉल्व किए थे तो हम क्या करते थे? वी ऐड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. यू नीड टू फॉरगेट अबाउट टी, बिकॉज इनमें से कुछ होंगे जो टी वाले भी होंगे, बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट. वी नीड business India or business world. Had the question said that only business India or business world, then we would have disregarded these three values. तब मैं सिर्फ इन तीनों को ऐड करता. Otherwise, I have to add all. Except this, everything would be added. Because except this number, all the numbers are either in the circle of
बिजनेस इंडिया और इन द सर्कल ऑफ बिजनेस वर्ल्ड. ठीक है, सेजल प्लीज मेक योर क्वेश्चंस डायरेक्टली टू द ग्रुप. ठीक है, आप मुझे अलग से पूछोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो. ठीक है, चलिए. तो हाउ मच इट इज 92 प्लस 43 इज 95 प्लस 135. तो यही हो जाएगा अल्टीमेटली. ये पूरा मिला के 135 हो गया ना, इन दोनों को जोड़ देना. 135 प्लस 72 का कितना आ गया ये? 135 प्लस 72. तो ये 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया. सो 207 इज द राइट आंसर. ठीक है भाई. फोर्थ, हाउ मेनी रिस्पॉन्डेड रीड नीदर बिजनेस वर्ल्ड नॉर बिजनेस टुडे. नीदर बिजनेस वर्ल्ड नॉर बिजनेस टुडे. ठीक, तो उसका आंसर कितना होगा? विल इट बी 80? द आंसर इज नो. यहाँ कहाँ लिखा है दैट ऑल 300 पीपल दे लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दिस? हो सकता है ना, देयर माइट बी सम पीपल हु डू नॉट लाइक एनी 3 ऑफ दिस. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द यूनियन. इफ आई टेक द यूनियन, then the addition of all these 4 is 135 plus 65 plus 18 and plus 54. ठीक है, if I add them, I'll be getting how much? 135 plus 65 plus 18 plus 54. I'm getting 272. So this is the union. The total number of people is what? 300. So can I say those people who do not like any of these three has to be 300 minus 272, which comes out to be what? 28. Correct? Now again reading, we don't need anyone who like business world or business today. So barring business world and business today, if I want those people, then they are either this or this. So their addition comes out to be 108. So this should be the answer. ठीक है भाई, क्लियर है? 80 प्लस 28 करना पड़ेगा अपने को. सिंपल क्वेश्चन था. स्टिल सम ऑफ यू गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस रॉन्ग. इसका मतलब अभी भी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो. ठीक है, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें. ठीक, चलो लेट्स मूव टू द मेजर थिंग विच इज why we are having this session, and that is we'll be given mostly 3 variables set, wherein the condition would be something which is either talking about this relationship with this plus this relationship with this, something like this. ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग condition दी. What first we have to do is that we have to read the condition and put these values in terms of variables. So you should not be afraid of taking variables. ठीक है, जितना भी आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता. But yes, you have to keep an eye on if you can reduce the variable immediately or as soon as possible. For example, if it say that this value is twice of this value. So one way of course is what? If I take x and y and if I say that x is equal to 2y, why should I unnecessarily make a different equation wherein I can straight away replace this y or replace this with 2x and this with x, so that I'm reducing the number of variables because I'm directly getting their relation. Yes or no? समझ में आ रहा है ना? Rather than taking x and y, I'm putting x is equal to 2y because the condition says so. Why not take this as an x and this as 2x? This itself making more sense. ठीक. Other thing is that once you have taken the variables, then the only way wherein you can attempt these kind of question is making equations. All will be a linear equation. The only thing which you have to focus is the logic of solving the linear equation, of course, plus you have to ensure that if there is some condition given, while solving that equation, you should keep that condition in mind and you should not be getting any values for any of these area which is negative. हो ही नहीं सकता ना. For example, suppose question बोल रहा है कि it is talking about some number of people. We know that the number of people cannot be represented as a negative number. There has to be a positive integral value, right? Or fraction, of course. ठीक है, कोई fraction में आ रहा something. किसी चीज में fraction आ सकता है if it is talking about some percentage. ठीक है, कोई 3 चीजों के मिक्सचर की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग, तो ठीक है फ्रैक्शन में वो चीज आ सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो. नेगेटिव तो फॉर श्योर नहीं होगा. अब फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट द सेट इज टॉकिंग. इफ सेट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, डजंट मेक लॉजिकल सेंस. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन. वी कैन नॉट हैव 2.5 पीपल और 2.5 बॉयज. तो वहां पे ये क्लियर होगा कि we will be focusing primarily on finding the
integral solutions. Thereby, what will happen is that although you have taken more variables, it may happen mostly that the number of equations will be lesser, right? If you have three variables, then in school we know that if there are three variables, we need three equations so that we can individually find the values of all the three variables. But it may happen that you are getting only you're having three variables and you are getting only one equation or two equations. In that case, some additional condition and the logic of not getting negative or being fraction, etc., something like that will help you to come up with cases. ठीक है, ये बात clear है, right? The basics will remain same, and that is focus on the area which is the overlap of all three. If you focus on getting the value of this, and if this is given, then focusing on the other overlap area this, then it is high, it's a high chances that you will get the solution very quick. ठीक है? Although it all depends upon what the conditions given there, but still कुछ ना कुछ तो idea होना चाहिए ना कि कहाँ पे we should be targeting. So that target area should be the overlap areas. ठीक है भाई, क्लियर है ये? फाइन. ये चीज याद रखना दैट वी हैव टू मेक इक्वेशन. यू शुड नॉट अफ्रेड अबाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरिएबल. 3 4 5 भी हो रहा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज द कंडीशन वंस यू स्टार्ट प्रोसेसिंग दोस कंडीशन you will get the connection between those variables, and no area should be negative. And if the question is such that when the fraction is also not allowed, that should also be kept in mind. Am I absolutely clear, everyone? yes no में बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, डायरेक्टली टेकिंग कैट क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड दीज आर द सेट्स व्हिच शुड हैव बीन अटेम्प्टेड. जब भी आया था, आई थिंक 2018 का है ये सेट. सो आई एम टेकिंग दोस सेट्स ओनली सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट व्हाट एक्चुअली कैट इज आस्किंग. अभी जो हमने किया ना, ये तो जनरल ये था दैट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी शुड बी नोइंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू एंश्योर दैट हु इज अंडरस्टैंडिंग इट इन डेप्थ, उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, चीजें वही रखेंगे. द ओनली थिंग इज दैट दे विल बी giving you such conditions so that while processing those conditions you have to keep an eye on 2-3 things which is very obvious in Venn diagram, and that is variable लो, equation बनाओ, and nothing, no place should be negative or fraction. ठीक है, चलो मैं ये सेट लेता हूँ इसको. एक मिनट ऐसा है, थोड़ा सा मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, otherwise I'll not be getting space. There are 4 conditions. ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच, इट विल नॉट हेल्प यू मच. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आ गया, ठीक है. इसको जस्ट रीड इट and I'll give you a minute. Read it, all the conditions, and just make the Venn diagram. Take help of variables. ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. जस्ट मैच करो कि आपने चीजों को सही पे लिया है कि नहीं. ठीक है, वेरिएबल मैच नहीं करना चाहिए. मैंने एक्स लिया तो आप भी एक्स लो, विल डू. बट एटलीस्ट दी ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो ले रहे हैं या जो कंडीशन के साथ मैच होने चाहिए वो प्रॉपरली आ रहे हैं. ठीक है, टेक 2 minutes एंड डू दैट.
हाँ भाई, अभी सॉल्व करने पे नहीं जा रहे हैं, वी विल जस्ट फोकस ऑन वेदर वी कैन कैप्चर द डेटा अप्रोप्रिएटली और नॉट, ठीक है, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरिएबल. So what it said, there are 1600 satellite and they went for they were sent by the country for several purposes. The purpose are classified as broadcasting, communication, surveillance, and others. The satellite can serve multiple purposes. However, satellite either serving B, C, or S do not serve others. That means this line is basically ensuring me that my structure should be like that. Broadcasting, the overlapping would be between broadcasting. The overlapping can be between broadcasting and communication and surveillance, broadcasting and surveillance. ये तो हो सकता है, but nothing is overlap with others. तो others को हम यहाँ पे बाहर रख देते हैं. This is for others. ठीक है? Is the structure clear, everyone? So this is for broadcasting, this is for communication, and this is for surveillance. ठीक है भाई? Can you please confirm? And whatever is outside this will be coming here because B or C or S is nothing but the union of B, C or S, and nothing is common between the union of this and the others. ठीक? Okay. Now the total number is what? 1600. So we'll just ensure that this 1600 is nothing but union of this plus others, right? अब आते हैं क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है. The number of satellites serving B, C and S though may be not exclusively are in the ratio of 2:1:1. What it's saying is that whatever the number come in the circle of B, that will be twice the number of terms, the addition of terms which comes under the circle of C. यही बोल रहा है ना. Similarly, this will be double than this. Is this portion clear, everyone? अभी मैं इसको सिग्निफाई नहीं कर रहा हूँ, तो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? Because I'm more interested in getting the अंदर वाला value and that too the middle वाला value. The number of satellites serving all three. Yes, it's good. ये तो यहीं पे दे दिया. So my confidence should increase. Why so? Because that is the toughest portion mostly. ठीक है? ये तो 100 दे दिया यहीं पे, अच्छी बात है. Further, the number of satellites exclusively serving C. What is exclusively serving C? Only C, no? This is same as the number of satellite exclusively serving S. Yeah, so these two are equal, and this number is 30% of the total, 30% of the number which exclusively serving B. इससे ये दोनों individually 30%. This number in the sense individually it is talking about only C and only S. So for our practical purpose, I can take it as 10x, I can take it as 3x, and I can take it as 3x. ठीक है? Nimisha, which portion you want me to repeat? Second one or the third one? The number of satellite exclusively serving C means what? Only C, ना? Second one क्या बोल रहा है? All three के लिए 100 है. इसमें ऐसे क्या explain करने का था? The number of satellite serving all three B, C, and S is 100. ठीक है? Third, the number of satellite exclusively serving C, assuming it to be C3 of x, is same as the number of satellites exclusively serving for S. इसको भी 3 of x ले लिया. बोला this number, that is this number, is 30% of the number of satellite exclusively serving B. इसका 30% है. So if I add them completely, can I say if I take this as 3x, this as 3x, this would be 10 of x, so that this 3x is 30% of 10x. Yes or no? Right? Don't be confused कि in total को 30% बोल रहा है. ये ऐसा नहीं बोला, because this number, otherwise it should be written like the total of these number. ऐसा लिखता ना. This number लिख रहा है, that means this number is talking about individually for only C or only S. Am I clear now, everyone? ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ की हो तो अभी आप उसको सुधार लो अपने जिसमें गड़बड़ की हो, ठीक है? फिर क्या बोला? The number of satellites serving O or others is same as the number of satellites serving both C and S but not B. Both C and S but not B. It is talking about this, so let me assume it to be Y. So this 2 should be equal to Y. Right, guys? ठीक है यहाँ तक, right? अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, which is very very easy. What it's saying is that the number of satellites serving B is twice the number of satellites serving C and S. So can I say the total of this circle must be equal to total of S circle? The total of C circle must be equal to total of S circle. Yes or no? So can I say ये 3x है, 3x है, ये तो कॉमन है.
these two should also be equal. Then only we can say that the total of circle C should be equal to total of circle S. Everyone, can you please confirm? Yes. Okay. Now, how many variables we have introduced? We have introduced 3 variables. So ideally, we should be getting 3 equations. Okay, but a CAT है, DILR है. So obviously, I'm expecting to make 2 equations. I'm expecting to make 2 equations at least. Okay. So what I'll do is that I'll go through all these 4 and try to again assess, is there any relationship between X and Z, or is there a relationship between Y and X, or is there a relationship between Y and Z? तो आप एक बार go through करके बताओ क्या मिल रहा है क्या? Any relationship between any two of these 3 variables? Can we figure out? हो सकता ना मिले, ठीक है, but still we have to figure out. B, C and S के लिए वेरिएबल, हाँ नहीं, दैट विल कीप इन माइंड, ठीक है. उसमें क्या होगा ना, सम ऑफ दीज शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, ऐसा कर लेंगे. ऐसा कुछ रिलेशन अभी मिल रहा है क्या अपने को? पहले वाले कंडीशन में हमने प्रोसेस नहीं किया ना अभी. वी हैवंट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, और वी हैव प्रोसेस इट पार्शियली फॉर गेटिंग दीज टू वैल्यू. ठीक है. एंड यस, यही मैं खोज रहा था. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस. आई हैवंट प्रोसेस दिस. I haven't processed the total of everything, whatever is written here should be equal to 1600. And using this, I can make equation from 2:1. एक और equation बना सकता हूँ ना, that total of this should be equal to twice of this, or total of this should be equal to twice of this. So effectively, what is happening? I'm having 3 variables and I can create 2 equations. Yes or no? Do you agree or not? Yes or no? One by taking this and other by using this. ठीक है. तो मैं I'll give you some time. Please make that equation. वो 2 equation बनाओ. Make that equation. One, adding all everything should be equal to 1600, and one is take this. This should be equal to twice of entire thing. तो वो 2 equation बनाइए. 30 seconds. नहीं, थोड़ा और प्रोसेस करो सेजल. जैसे 100 है ना, 100 कैंसिल हो जाएगा 1600 से. Z कैसे आया? देखो क्या बोल रहा है. C और S के बीच में रेशियो क्या है? 1:1 ना, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए. करेक्ट. तो हमारे पास ये नहीं थे, बाकी चीज था. सम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दिस. तो बट ऑब्वियस है ना, आप इसको A और B भी लोगे तो व्हाट विल कम टू नो? A इज इक्वल टू B, बिकॉज ये तो इसके बराबर हो गया, ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये दोनों बराबर होंगे ना. देन ओनली वी कैन से दैट सम ऑफ दीस 4 मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीस 4. फ्रॉम दैट, विदाउट मेकिंग एनी अदर एफर्ट ऑफ मेकिंग केसेस एंड इक्वेटिंग, हमने सीधा बोल दिया कि बराबर है, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज Z. ठीक है. ओके. नाउ सीजल, यू आर मेकिंग वन मिस्टेक जो मुझे यहाँ पे अपेरेंटली दिख रहा है. 1600 इज टोटल ऑफ दिस प्लस दिस ना, तो आप y को क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ पे? सबको ऐड करो. देखो, this plus this plus this is 16x, correct. Z is twice, 2 times of Z. Y भी 2 बार होगा ना, ये वाला और ये वाला. Plus of 100 should be equal to 1600. ठीक है. तो यहां से this will go out, this will become what? 1500. 2 से डिवाइड कर देते हैं, so we are getting 8x plus Z plus of Y is equal to 750, and that should be my equation number 1. ठीक है. और सिंप्लीफाई कर लो 2 से डिवाइड करके उसको. तो सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर ही सकते हैं हम 2 से डिवाइड के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? वी कैन टेक this would be equal to twice of this. So if I add this is nothing but what? 10x plus 2 times of Z plus of 100. That should be equal to twice of this. So मैं सभी को डबल डबल कर लेता हूं, राइट. सो ट्वाइस करने के बजाय सीधा लिख देता हूं, twice of 3x is 6x, twice of y, twice of 100 is 200, plus twice of Z. देखो ये 2Z कैंसिल हो गया ना, this 100 will go away, ये भी 100 हो गया, correct. This 6x will go by 4x. So I'm getting
और 2 से भी डिवाइड कर देता हूँ, तो आई एम गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 50, और आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ y इज 2 of x minus of 50. This is my equation number 2. Agree everyone? ठीक, अब देखो दो इक्वेशन है, सारे कंडीशन प्रोसेस हो गए. नाउ व्हाट शुड आई डू? आइडियली वी शुड बी प्रोसेसिंग देम so that everything should boil down to only one equation. एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते बिकॉज वी नो कि और कोई कंडीशन बचे नहीं है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट if I substitute this value of y in the first equation, can I get the value of z in terms of x? Can I get the value of z in terms of x? जैसे निकाला ना y in terms of x, वैसे हम z into x निकालना चाहते. So let us substitute this value here. So substituting the value of y is equal to 2x minus 50 in equation number 1, I am getting 8 of x plus of z plus of 2x minus 50 and that is equal to 750. ठीक है, ये इधर आएगा तो 800 बन जाएगा, करेक्ट. और 2x करें ना, 8 of x, z की वैल्यू कुछ और तो मिस नहीं कर रहा हूँ ना इसमें. z should be equal to 800 minus of 10x. बोलो यहां तक क्लियर है एवरीवन? ये सुनो, ठीक है. Now why I'm doing this? Because I want to get rid of 3 variables. I want to only take 1 variable. ठीक है, I want to take only 1 variable. So can I say this z can be replaced as 800 minus 10 of x? Similarly, this z should also be replaced as, आप अपनी कॉपी में भी एक बार बना लो, this y can be replaced as 2x minus 50. This y can be replaced as 2x minus 50. बोलिए, क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हॉल्ड करते हैं, 2 मिनट इधर आओ. अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना उसको बताते जाना, ठीक है. सपोज हम कोई क्वेश्चन बना रहे थे एंड वी हैड 3 थिंग्स, 3 variable things and some portions are given. I'm just writing random numbers here. I'm just writing 10 plus x. I'm writing 5x minus 1. I'm writing 20 minus x. I'm writing 40 plus of x. I'm writing x. I'm writing say 10x minus 3. I'm writing 50 minus of x. Something like this. ऐसा लिख दिया मैंने, right? Now, can we assess some range wherein x can come? Can we assess some range wherein x can come? What I mean to say is that if I randomly take, can I take the value of x to be 100? Tell me yes or no. Can I take the value of x to be 100? If not, then why? Why not? X cannot. If I take the value of x to be 100, this will become negative, na? ये भी negative हो जाएगा. Are you getting everyone? Right? That means there is an upper limit for x. There is an upper limit for x. So what is that limit? What is that limit? It is 20, not 50. Right? It is 20. Anything more than 20 for x, this will become less than 1. Oh, sorry, less than 0. ये चल जाएगा, ठीक है. So can I say x has to be less than or equal to 20 for sure? Correct guys? ठीक है. और इसी में अगर मैं जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे जस्ट मॉडिफाई कर रहा हूं, if I can make like this, that x minus 8 ऐसा होता, मान लो फॉर एग्जांपल. Now can I say if x is less than 20, can I take the value of x to be 0? No. Can I take the value of x to be 1? Again, no. This should not be less than 0. So can I say x has to be greater than or equal to 8? Getting it? That means I am getting a range of x. X should be between 20 and 8. 20 and 8. 20 and 8 is 100. 100 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 and 8 is 100
आपको यही निकालना होता है, और ये तभी निकलेगा व्हेन एवरीथिंग every place is having only one variable. ठीक है. Now every kind of question including maximum minima question can be answered. How? The same question ऐसा पूछ सकते हैं ना, what could be the maximum number of people who like all three? क्या होगा आंसर? What could be the maximum number of people who like all three? What is all three x? What is the maximum value x can take? So the answer would be what, 20. ये minimum भी पूछ सकता था, minimum would be 8. ठीक है. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ऐसा पूछ सकता हूँ व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी. क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी, व्हाट आई डू इज दैट आई विल ऐड ऑल दीस. सबको ऐड करूंगा मैं. ठीक है. सो दिस इज 5x प्लस 10x. ये x कैंसिल हो जाएगा. सो दिस टू टुगेदर विल मेक इट 15 ऑफ x माइनस दिस इज 3 4 और ये 50 है. ठीक है. सो प्लस ऑफ 46 आ गया ना. This is the value of b. Now maximum value of b will depend upon x. So if I maximize the value of x, I'll be getting maximum value of b. ठीक है. And what is the maximum value of x? I can take 20. 20 substitute कर दूंगा. Whatever comes, that becomes the maximum value. Had it been about minimum value of b, we also know that the minimum value of x has to be 8. Then I'll substitute the value of x to be 8. We'll get the minimum value of b. I hope you are getting it what I'm trying to say. ठीक है. ये क्या होता है ना, सॉल्यूशन में लोग फटाफट करके निकल जाते हैं. मैं आपको थोड़ा ड्रिल करना चाहता हूँ, so that you should understand the importance of keeping every place not more than having one variable, so that you can figure out such things. And once you have figured out such thing, then even if the question has some condition, depending upon the condition, you can plug that value of or values of variable and get to the answer. Am I clear everyone? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक. चलो वापस चलें इस वाले क्वेश्चन में. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं. सो अभी आपको समझ में आ रहा है कि वाई आई एम रिप्लेसिंग वाई एंड जेड. आप बोल सकते हो सर क्या इज इट मेथड? नहीं. आई जस्ट वांट दैट एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल. तो ये मेथड है ना आप दिमाग में कि नेक्स्ट टाइम इफ आई कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, माय जॉब शुड बी टू एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएबल, एंड इफ इट इज वेरी वेरिएबल इट शुड नॉट बी मोर देन. वी शुड ट्राई. ठीक है. हो सकता है किसी केस में ना बने, बट फिर भी वी शुड ट्राई. अगर वो होगा, बनने वाला होगा, and if I am not trying in that direction, then definitely it's very difficult to reach there. But if I am trying and it is possible in that case, then definitely I'll be getting the solution quickly. Right? ठीक है. So everything is done now. Now one thing we might say, sir, if there is only one variable, why not take the union of everything and we can get the value of x straight away. कितना दिया यूनियन? 1600 है ना. Guys, are you understanding what I'm trying to say? Some of you might think that if there is only single variable, why not take the union? Union is 1600 ना. Addition में सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, and that will be getting by this. अब मैं बोल रहा हूँ आप करके देखो क्या आ रहा है. Just add them. Are you getting the value of x? कैंसिल हो जा रहे हैं ना. क्यों कैंसिल हो रहे हैं? सब देखो वेरिएबल जो x है ना वो कैंसिल हो जा रहा है. ये 10x है, ये और ये. ठीक है. और ये मिलकर 20x हो जाएंगे, और माइनस 10x करके कैंसिल, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस बाय यूजिंग द सेम रिलेशन ना. ये 1600 का रिलेशन करके ही तो हमने वेरिएबल लाया. सो वापस जाएंगे तो क्या होगा? वी हैव इंट्रोड्यूस द वेरिएबल. ठीक है. वी हैव मेड द इक्वेशन. नाउ वी आर अगेन इंसर्टिंग द वेरिएबल इन द इक्वेशन एंड वी आर ट्राइंग टू रिवर्स. सो रिवर्स में होगा क्या? योर इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल विल गेट कैंसल्ड. ठीक है. और आई कैन से दैट द सेम condition cannot generate two different equations. Because of that reason, will not be getting the value of x. ठीक है. बात समझ में आ गई? राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये तो हो गया. Now we can't do much about the value of x as we have identified कि नहीं यार वो तो सारे कैंसिल हो जाएंगे. So we have to move to the question direct. ठीक है. तो मैं क्वेश्चन लेता हूं. अभी तक किसी को डाउट तो नहीं इसमें? फिर क्वेश्चन को we have to independently handle all the questions. देख लेता हूं इसमें. सर. हाँ बेटा. सर वो आपने जो सेकंड इक्वेशन बनाई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. 2 मिनट दो मेरे को, बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है.
चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। सेकंड इक्वेशन मैंने बनाया था ना, सेकंड इक्वेशन कौन सा बनाया था मैंने, ये वाला, इधर वाला बनाया था। देखो क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला इक्वेशन क्या था, सब हटा रहे यार, ये क्या हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनिशियली इट वाज z, यहाँ पे इनिशियली इट वाज z, ठीक है, करेक्ट, और ये y था। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया था, वी हैव एडेड दिस, सो इट वाज 10x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस ऑफ 100, so 10x plus 2 times of y plus of 100, this should be equal to 2 times of c। आप s को भी ले सकते थे बिकॉज दोनों में तो सेम था ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 times of this means what, 2 times of z, 2 times of this, 2 times of this, 2 times of this, तो 2 times of x means what, या इसको ऐसा लिख लो 3x plus z plus 100 plus of y, इसको डबल करो, उसके बाद इसको रिड्यूस करोगे ना, देन वी वर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y which is equal to 2x minus 50। ठीक है, इतना कर सकते हैं आई थिंक, ये इक्वेशन बन गया तो यू कैन रिड्यूस इट टू दिस। यस सर। ठीक है ना, हाँ जी, एक मिनट, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये जेड वर्ड लिया था सब हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते, क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी, बोला इट मस्ट बी बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब वी वांट टू फाइंड द रेंज। ठीक है, अब ये रेंज वाले पे आते हैं। नॉट टेल मी फ्रॉम हियर, इफ आई लुक एट दिस, can I say x cannot be less than 25? Yes or no? हमें तो ये करना चाहिए था ना, x to ensure that this is non-negative, x has to 2x has to be 50 at least, that means the value of x has to be greater than or equal to 25। सब कोई मुझे बताओ पहले ये चीज समझा कि नहीं, कंफर्म करिए। ठीक, similarly looking at this, can I say 10 of x cannot be more than 800, otherwise 800 minus anything more than 800 will make this portion negative, so from here I can say that x has to be less than equal to 80, or the range of x is between 80 and 25। what an important information we have captured, although इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की जरूरत नहीं है, but to solve question number 1 this is what we require। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एकदम खटाखट बनने वाले क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबका यहाँ का भी एक्स का फॉर्म में लिख दिया, मुझे ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है, ये सी को पूरा ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है, सबको ऐड करो। 10x माइनस में है, 2x है, 5x है, माइनस 5x में आएगा, ठीक है। 800 900 माइनस 50, सो कैन आई से दिस इज 850 माइनस ऑफ 5x। ठीक, बी को भी ऐड करके बताओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10x हो गया, ठीक है, और 800 800 और दिस, सो 1700 माइनस ऑफ 10x है, और इसको अगर हम ऐड करें तो 10x कैंसिल नहीं होगा, माइनस 5x आएगा, 800 900 850, 850 माइनस 5 ऑफ x। एम आई करेक्ट एवरीवन, थोड़ा इंश्योर कर देना बिकॉज मैं पहले से नहीं किया हुआ सब चीज, ठीक है, सही आ रहा है ये। बस आप क्वेश्चन पे आते, सिर्फ क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे एंड विल जस्ट बी गेटिंग द आंसर फ्रॉम दिस। क्या बोला, व्हाट कैन बी दिस, ये रेंज दे रहा है ना, दिस इज टॉकिंग अबाउट द रेंज फॉर सी, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी। The C maximum value will depend upon the minimum value of x because वो minus कर रहा है उसमें, right? So if I take the value of x to be 25, C has the maximum value. So C max will be for x is equal to 25. Can you please confirm? Similarly, C min value would be for the maximum value of x which is 80. तो मुझे बताओ अगर 25 लेते हैं और 80 लेते हैं तो क्या आ रहा है वैल्यूज, 25 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 माइनस हो रहा ना, तो 725 आएगा, राइट, ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, और अगर हम 80 लेंगे तो ये आएगा। So can I say option A is the right answer? It must be between 450 and 725 because 450 is the minimum value and 725 is the maximum value.
करेक्ट। सेम लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिए। क्या बोला है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी एक्सक्लूसिव, इसको मिनिमम करना है बी एक्सक्लूसिवली। क्या होगा जब x मिनिमम होगा? करेक्ट, x minimum in the sense when x is 25, so the right answer would be option D. बोलो भाई, क्लियर है ना? सो दीज आर द टू क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत फंडामेंटल लेवल पे भी जाएंगे तो ये तो बन जाएंगे ना। देयर वर 4 क्वेश्चंस, आई एग्री कि बाकी 2 क्वेश्चन में शायद कंडीशन होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट ये 2 क्वेश्चन तो इजीली बन रहे हैं जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग दिस। वो 2 इक्वेशन बने, उसके बाद वी हैव आइडेंटिफाइड द रेंज ऑफ x। नाउ लेट्स सी द अदर 2 क्वेश्चंस। ये भी बन जाने चाहिए, ये भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आंसर क्या बोल रहा है? इफ एटलीस्ट 100 are serving O, at least 100 in the sense minimum value is 100. What is serving O? 2x minus 50, right? 2x minus 50 serve कर रहे हैं. So can I say 2x minus 50 should be greater than equal to 100? That's what this statement means. Thereby, can I say the value of x has to be greater than equal to 75? सही क्या होगा? ठीक है. If x की value minimum 75 है and the maximum value is what? 80. So on putting x is equal to 75 and x is equal to 80, what are we getting for s? यहाँ पे क्या आएगा? 75 पुट कर रहा हूँ और 80 पुट कर रहा हूँ, 80 पुट करने में कितना आ रहा है? x की वैल्यू 80 पुट करने में कितना आएगा? अरे बोलो भाई, 450। इस पे 450 आ रहा है और इस पे डेफिनेटली 5 इंटू 5 25 और बढ़ जाएंगे बेसिकली। इसमें कितना आ रहा है? 475। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ s इज डिक्रीजिंग। सो कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम इट कैन हैव? s will be ranging between 450 and 475. So can I say at most 450? This is the maximum range for s. Option A is the right answer. ठीक है ना? Exactly 475 क्यों नहीं आएगा? Because we are getting the value of x greater than or equal to 75, not exactly equal to 75. वही बता रहा हूँ. X has to be greater than or equal to 75. So that means for 75, the value of s is 475. For 76, it will decrease from 475. For 77, again it will decrease. For 80 at max, which we can take the value of x, it is at least 450. So this is the least value and this is the maximum value. That's the reason at most 475 make more sense than any other condition. ठीक रिजल्ट? ठीक है, चलो फोर्थ वाला बताओ. If the number of satellites serving at least 2 among these, at least 2 means किस चीज को ऐड करना है? We have to add these 3. Then which of the following must be false? ऐड करके बताओ कितना आ रहा है टोटल? कितना हो गया? 1650 माइनस 18x है. सही कर रहा हूं तो बताओ. 1650 माइनस 18x. ठीक है, अब चेक करते हैं. अब क्या करो, x की वैल्यू एक बार मिनिमम लो और मैक्सिमम. इफ x इज इक्वल टू 25, व्हाट इज दिस वैल्यू? 18 इंटू 25 को माइनस कर. 18 इंटू 25 किया, इसको मैं 1650 से माइनस कर दे रहा हूं, तो आई एम गेटिंग 1200. If x is the maximum, in that case 18 into 80, इसको मैं 1650 से माइनस कर दे रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग 210. ठीक है,
अब क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, मस्ट बी फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ना याद रखना, राइट, नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। यूनिकली तो एनी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। यस और नो? सो दिस इज ट्रू ना, बट वी वांट फॉल्स स्टेटमेंट, सो इसको मार्क नहीं कर देंगे। ये कैसे आया, बी सी और एस at least two is what, this area, this area, this area and this area, इन सब चारों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड, सही बात है ना, यूनिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स, यूनिक मींस एग्जैक्ट वन आंसर नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी इज मोर देन 1000, इज मोर देन 1000, बी के लिए बोल रहा है, दिस इफ एक्स इज 25, यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या कुछ, सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन मिसरीड कर दिया गाइस, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिसरीड कर दिया। ये आया था, बोला दिस इज इक्वल टू 1200, this is equal to 1200, I'm very sorry guys, if this is equal to 1200 that simply means if this is equal to 1200 so the value of x would be 20, ठीक है। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अब आते हैं, क्या बोला, द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी कैन नॉट बी, अब ये यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी यूनिकली डिटरमाइन, ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी इज मोर देन 1000, एक्स अगर 25 होगा, मोर देन 1000, ये भी सही वैल्यू है ना, ये भी हो रहा है। ऑल 16 सैटेलाइट्स सर्व बी और सी, ये भी सही है ना, बिकॉज इफ एक्स इज 25, ओ की वैल्यू 0 हो जाएगी। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली इज एग्जैक्टली दिस, बी एक्सक्लूसिवली, नहीं ये गलत बात है ना, बी एक्सक्लूसिवली विल बी मोर देन 1000 इन फैक्ट, सो ऑब्वियसली डी वुड बी माय राइट आंसर बिकॉज डी इज द फॉल्स, ठीक है, क्लियर। सो ये देख लो, ये कैट में आया हुआ था, कोई भी चीज स्टार्टिंग से आप 5-10 मिनट्स पीछे जाके देखो, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं थी जो बोलोगे बहुत चैलेंजिंग, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 95% चीजें पूरी पूरी मैथमेटिकली थी, कोई भी बहुत लॉजिक और बहुत कंबाइन करने की जरूरत नहीं, वी जस्ट वांटेड द रेंज, और वो रेंज के लिए ये पूरा, इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, यस और नो, दिस रेंज इज सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स अलग अलग वैल्यूज आने लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन का कंडीशन वी आर मैचिंग एंड वी आर जस्ट फैचिंग दोस वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला ना कि ऐसा होगा, तो वी आर जस्ट फैचिंग दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी आर आल्सो ensuring that this is within that range, ठीक। चलो, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़े नेक्स्ट सेट में। इसकी लर्निंग याद रखना है ना, वी हैव टू मेक द इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। सेकेंडली वी शुड मेक द इक्वेशन इन जनरल वुड बी लेस देन द नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो उसमें अदर कंडीशन लाइक बीइंग इंटीग्रल नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसे कुछ कंडीशंस आएंगे, किसी में माइनस में होगा, किसी में प्लस में होगा, उससे हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड सच काइंड ऑफ रेंज, एंड वंस दिस रेंज इज डन, और जॉब इज, फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी कैन जस्ट डू देन एंड देयर इटसेल्फ, कि वहां से जो भी चीज आएगा वी कैन जस्ट मैच अप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, मैं सबको हटा देता हूं सो दैट इट विल नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। गलत कर दिया क्या, देखो हो सकता है ना, मैं कुछ नहीं कंफ्यूज करता, एक मिनट चेक करता हूँ, रुको, क्या था वो, सेकंड वाला था ना, एक मिनट गाइस, let me just reconfirm, if the number of satellites serving at least two is this, which of the following must be false, so from here we identified the value of x to be 25, ठीक है, फिर क्या बोला, false निकालना, the number of satellites serving c cannot be uniquely determined, डिटरमाइन कर सकते हैं, ये तो यूनिक आया, तो ये डी वाला कुछ गलत कर दिया क्या, डी वाले में क्या रहा है,
द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली, ओके मैंने यहाँ पे गलत कर दिया सर डिटरमाइन कर सकते हैं हाँ मतलब हाँ फॉल्स है, नहीं 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 सॉरी सॉरी, एंड डी विल ये बी नहीं ट्रू। होगा बिकॉज ये तो हो जाएगा ना 3, क्या बोला था, नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली, बी एक्सक्लूसिवली तो ये था ना, ये बी एक्सक्लूसिवली था 10x, सो x की वैल्यू 25 होगी तो 250 हो जाएगा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, प्लीज मेक दिस करेक्शन एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, सभी से हो जाता है कभी कभी, ठीक है, आई डू नॉट टेक द आंसर कीज while taking the session so that कि वो थोड़ा बना रहना चाहिए ना, अदरवाइज वो आंसर की तरफ भागेंगे, false statement निकालना था, तो A is the false statement, rest all three statements are true statement, because here we can uniquely determine because we have got the exact one value of this. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, ये तो कॉपी नहीं हुआ अभी, हाँ ये भी कैट में आया हुआ, कैट, ये दोनों कैट 2018 के ही है क्वेश्चंस, पोर्शन है, ये ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ।
हाँ जी, शुरू करें. So I've given some time, and that time should be utilized to make that Venn diagram and put the numbers, as many numbers and variables as the conditions are suggesting. ठीक है. कोई क्वेश्चन था भाई? अंतरिक्ष क्या बोल रहे हो? हाँ, 4 सेट वाला उतना कॉमन नहीं है, एक आदमी बार आया तो मैं बताऊंगा बाद में उसको. ठीक है. ये 3 वाले ज्यादा आते हैं, इनको देखो. क्या बोला? देयर आर G, K and L. Total enrollment is 39. और ये क्या बोला? At least one of the 3 sports में, that whosoever is enrolled, they are at least, that means the union is 39. Nothing is outside this. ठीक है. So let us draw G, K and L. Correct? The union is 39. फिर क्या बोल रहा है? The number of students enrolled only in L is double the number of students in all the 3 sports. ठीक है. So if this is X, this has to be 2 of X. ठीक. There are total 17. तो ये 17 हो गया. The number of students enrolled only in G is 1 less than the number of students enrolled only in this. इससे एक कम. This is 2x minus 1. For the number of students enrolled only in K is equal to number of students who enrolled in both K and L. Both K and L is these two. ये मालूम नहीं है, so let me assume it to be y. So this is x plus y. Can you please confirm fourth वाला? Fourth वाला confirm करो if you have understood. ठीक है ना? फिर the maximum student enroll is in this. ऐसा लिख देता हूँ. 10 students enrolled in G are also enrolled in at least one of the more sports. 10 students out of these 17 who enrolled in G, they enrolled for more than one sport. So can I say out of these 17, 10 are enrolling greater than 1? So can I say 7 are enrolling for exactly one subject? Yes or no? So can I get the value of x directly? निकल सकता है ना? This entire thing is nothing but equal to 7. So 2 of x minus 1, if this is equal to 7, the value of x has to be 4. तो मैं replace कर देता हूँ, because my job is to get rid of variables, right? So let me replace this and this and this and this. ठीक है? This is equal to 7, this is equal to 4, this will be equal to 8, and this will be equal to 4 plus 1. ठीक है भाई? Now the condition is not talking anything about these two. ये मालूम ही नहीं. But can I get the union? What is the union? Union is sum of all the 7 areas. These two are left. So can you get me the sum of the rest of the 5 areas? या मुझे एक बात बताओ, ये G को देखो. Forget about the union. G, the total is 17. So this plus this plus this plus is 17. This plus this is 11. So left is 6. So we are left with only 6, and that 6 would be between these two. So if I'm taking this to be, say, A, then this should be 6 minus A. Correct? Okay? Now you take the union. You'll be getting only one variable y, because this A will get cancelled, and that you need to equate it with 39 और y की वैल्यू आ जाएगी. तो उसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप मुझे बताओगे y की वैल्यू कैसी आ रही है. सबको ऐड करो. Add all these 4, that is 17. चलो बना ही देता हूँ. फिर इसको और इसको ऐड करना है, तो ये दोनों मिला के 12 हो गए. ठीक है? प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, दैट शुड बी इक्वल टू 39. ये दोनों मिलकर 29 हो गए, तो दिस विल बी 10. सो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ y टू बी 5. ठीक है? नाउ लेट मी गेट रिड ऑफ y आल्सो. सो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज इक्वल टू 5. बोलो, यहां तक सब कोई कर सकते हैं ना 5 मिनट में? नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब आंसर भी निकालोगे, लेकिन यहां तक तो क्या आ सकता है? बोलो भाई, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं कहीं पे? ठीक. Now we have only one variable A, and we have exhausted all the conditions. That means there must be something given in the question. Let's see कि question में क्या दे रहा है, and then we'll move ahead. ठीक है? Question में क्या बोल रहा है, इसको एक बार देख लेता हूँ.
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, फिर बाकी 2 क्वेश्चन बाद, ठीक है। चलो 7 तक ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ठीक। चलिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6, 2 minutes, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। हाँ जी, minimum number of students enrolled for both G and L but not K. So can I say it is talking about this? It will all depend upon it. That means we have missed something which should be processed, ठीक है। और वो जो something था ये, इसको तो अभी हमने ध्यान ही नहीं दिया था, that L should be more than any other. So can I say this value should be more than 17, ठीक है। In fact, let us write down the value of K. कितना आ जाएगा? 18 plus A. So this should be the sum of this. If I want to find, then this is what? 6 plus 18 plus 5 is 23. This is 23 minus A. So this 23 minus A must be greater than 17, must be greater than this. So 23 minus A should be greater than 18 plus of A, right? So can I say the value of A should be less than 5? No, 2 of A should be less than 5, or the value of A should be less than or equal to 2, because we want integral values. ये बात क्लियर है? Yes or no? 2 of A should be less than 5. So the value of A has to be less than or equal to 2. So that this relation is valid. This is for L, this is for K. This has to be the maximum. To ensure that this is maximum, the value of A has to be less than or equal to 2. Am I clear, everyone? बोलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आई थिंक। कुछ रिपीट करना है इसमें? एक बार और देख लेते हैं। दिस इज L, 23 minus A is L. This has to be less than 18 plus A. So from here, I'm getting 2 of A should be, A को यहाँ पे लाता हूँ तो ग्रेटर हो जाएगा ना, क्या कर दिया लग रहा है मेरे ख्याल से। रुक जाओ, 2 of A को इधर लेके आता हूँ। अरे यार, एक सेकंड। 2 of A should be greater than 5. So the value of A should be greater than 5 by 2. सही कर रहा हूँ ना भाई? क्योंकि 2 से बड़ा होगा तो बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये है कि A 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। So A should be greater than or equal to 3 in this case. Am I correct, guys? Can you please confirm? ये वाला सही आ रहा है क्या? This is not the correct interpretation. And the other thing is we have to compare it with 17 also. So 23 minus A should be greater than 17, right? So A यहाँ पर आ गया, और it should be less than 23 minus this. 6 से छोटा होना चाहिए, तो खैर इसी यहीं से आ गया बेसिकली,
6 minus a should not be this ना, a की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू could you please k and l, it says that the sum of this should be greater than sum of this, that was the condition। एक बार कंडीशन को देख लें क्या, वो शायद कंडीशन नहीं आ रही इसलिए मिस हो गया, ये लिखा ना द नंबर ऑफ एनरोल ओनली इन एल, सॉरी maximum number of student enrolled in L, maximum number of student enrolled in L, ठीक है। what does it mean? Compared to K and compared to G, more number of student are in L, ठीक है ना। right, so this total was 23 minus A and this total is 18 plus A. I have to take such value of A so that this value should be greater than this, ठीक है। so this should be greater ना, ये स्क्रीन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझसे, 23 minus A is this, so the value of 2 of A should be less than 5, हाँ तो यहाँ पे सही किया था मैंने, ठीक है। so the value of A should be less than 5 by 2 or I can say that A की value less than 2.5 होना चाहिए, so we want integral value, so I can say that the value of A has to be less than equal to 2, integral value की बात अभी क्लियर आई थी, ठीक है। so here we can make a small table in the sense we can take the value of A, we can take the corresponding value of L and we can take the corresponding value of K, ठीक है, या यहीं पे कर लिख सकते हैं इसमें, यहीं पे इसको बना लेते हैं। if I take the value of A to be 0 then this is 23, correspondingly this value would be 18, if I take the value of A to be 1 then this will be 22, correspondingly this will be 19, and if I take the value of A to be 2 then this is 21 and correspondingly this value would be 20। ये तीन केस बन रहे बेसिकली, आइदर दिस इज 23 18 और 22 19 और 21 20, ठीक। बाकी अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बोथ जी एंड एल बट नॉट के, ये मिनिमम कब होगा, जब ए मैक्सिमम होगा, एंड व्हाट इज द ए मैक्सिमम 2, so can I say 6 minus 2 which is equal to 4, that should be the answer, yes or no guys, ठीक। if the number of students enrolled in K and L are in the ratio of this, K and L are in the ratio of this, then what is the number of students enrolled in L? 19 20 का देख रहा हूँ, देखो ये 19 होगा, ये correspondingly 22 होगा, यही है, ये रेशियो भी है और ये एग्जैक्ट वैल्यूज भी होने चाहिए, so the number of students enrolled in L would be 22। ये दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा वर्क नहीं करना था, the only thing is that we have to process all the information, ठीक है। अब 7th वाला क्या बोला, ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन ऑल, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, ये दोनों क्वेश्चन हो गए सभी से, ये सुनो, ठीक है ना। तो जस्ट टू एंश्योर मैं दूसरा बना लूं क्या, यहाँ पे एक दूसरा बना लेते हैं यहाँ पे, सो दैट कि इसमें वर्क करेंगे ना तो समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, जी के और एल, ठीक है। जो जो चीजें आ गई उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 7A9 आ रहा है, दिस इज 7, दिस इज A, दिस इज 9, this is 6 minus A, this is 4, this is 5, this is 8, ठीक है। now due to academic pressure this is क्या है, G है, A है और L है, the student who are enrolled in all three sports, that is it is talking about these 4 people, were asked to withdraw from one of the 3 sports, one of the 3 sports से अगर withdraw करेंगे, so can I say here it should be 0, yes or no, right, so these 4 people will get distributed at these 3 places, all 3 से सभी से एक एक सब्जेक्ट हटा लिए, तो सभी जो 4 हैं, for all these 4 each one of them will be enrolled for exactly 2 subjects, then
या सब्जेक्ट है या आप जो भी स्पोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक। After the withdrawal, the number of students enrolled in G was 6 less than the number of students enrolled in L. तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहले 17 दिया था ना वो अब काम का नहीं रहा, बिकॉज द एंटायर सिस्टम हैज बीन बेसिकली उसको सेकंड हो गया, ठीक है। सो G is 6 less than L, that means L minus G should be equal to 6. While the number of students enrolled in K went down by 1, K से एक कम हो गया। अब K से एक कम कैसे हो, इसको पहले देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से देयर इज अ गुड लर्निंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के वेंट डाउन बाय 1, forget about that all 4 people are leaving, just do one thing, assume that there is only one guy out of this 4, he moved from here to here, ऐसा कर जाता है, ठीक है। यहां से एक माइनस हो जाता है और यहाँ पे एक प्लस हो जाता है। सो कैन आई से दिस पर्सन is moving out from this circle of K? Yes or no? Because of that, the total of K will reduce by 1. Yes or no, guys? वो 4 मान लो आपके फ्रेंड है ना ABCD, तो D is moving from all 3 to exactly G and L. उससे होगा क्या, the total number of people who are liking K will reduce by 1. Yes or no? ठीक है। So that means this will happen only if that person will leave K and will move to G and L only. एक ही सब्जेक्ट छोड़ना है ना, तो वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, K होना चाहिए, so that एक K से डाउन हो जाए। नहीं, 5 minus 1 नहीं करना, because we have to move only these 4 people. ये 4 लोग ही छोड़ रहे हैं ना, ये बंदा नहीं छोड़ रहा। These people are not leaving. Only people leaving is all 3 वाले sports. ठीक है। Now finally we want it to be 0. So 4 minus 1 is 3. So they will go either this side or this side. Let us assume that it is going this side, so that it becomes 0. This becomes 0. ठीक है। या अपन ऐसा भी कर लेते हैं कि let us assume that some of them, the 3 of them, x has moved here. So can I say 3 minus x would have moved here? Yes or no? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सर सर पर ये तो अभी भी के अंदर ही आता है ना? हाँ, के अंदर आ रहा है ना। ऐसा करने पे के का सिर्फ एक ही डाउन हो रहा है। वो कब होगा, when only one person is leaving K and retaining G and L. तो उस बंदे को that person has to be counted here only ना। Rest 3 people, some of them are leaving G and some of them are leaving L, but they are retaining K. इनका टोटल करो, कितना आ रहा है, सबका टोटल करो, हाउ मच इट इज, करो एक बार टोटल कितना आ रहा है। कैन आई से दिस इज 17 प्लस ए? यस और नो? ठीक है। अर्लियर इट वाज व्हाट, 18 प्लस ए, एक कम हो गया ना। वो बंदा गया कहाँ, ही वेंट हियर, ही लेफ्ट के। सो ऑब्वियसली देखो, ही दैट गाय दिस वन कहाँ गया, this person when he was at this place he had G, K and L all 3. He is leaving K only, so that this circle will reduce by 1. He is only leaving K now, so he will be counted in G and L now. Yes, so sir. effectively this place should become 7 minus A. 6 minus A था, वो 7 minus A हो जाएगा। ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला, इसमें से 3 लोग क्या होंगे, सपोज X person is moving at this place leaving L, the rest of the 3%, rest of the people 3 minus X will move here, so that this becomes 0. क्योंकि इसके अंदर क्या आना चाहिए, एक 1 यहाँ से, 3 minus X और ये X, जब सब आएंगे वापस तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा करने से हो क्या रहा है
ये डिफरेंस 6 हो जाएगा. So what is the total of this? What is the total of this? Can I say 14 plus of x? And what is the total of L wala circle? 15 plus 5 is 20 plus 3 is 23. 23 minus a minus x. ये L हो रहा है. And G is what? 14 plus of x. This difference should be equal to 6. ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं. कितना आएगा? 23 minus 14 will make it how much? 9. 9 minus a minus of 2x is equal to 6, or the value of a plus 2 of x should be equal to 3 if I'm not wrong. बोलो भाई, ये आ रहा है? Yes or no? ठीक. Now we know that the value of a has to be less than or equal to 2. क्या निकाला था ना? The value of a has to be less than or equal to 2. Or if you want to figure out कि क्या possibility हो सकती है, then we all know that this x should be getting such value so that the value of a should be integral and non-negative. If I take the value of x to be 0, then the value of a becomes what? 3. जबकि a की वैल्यू क्या थी? Should be greater than or equal to 2, right? तो ये गया. The value of x is equal to 1. Correspondingly, the value of a has to be 1. The moment I take the value of x to be 2, the value of a will be less than 0. तो ये anyway चला गया. So can I say this is the only solution possible? Yes or no? This is the only solution possible. हमसे पूछा गया था how many students were enrolled in both G and K. Both G and K, ये पूछा था. So the answer would be what? A plus x both will be equal to 0. लोगे तो क्या होगा? A की वैल्यू 3 आ जाएगी ना. A की वैल्यू 3 आ जाएगी, बट यहाँ क्या दिया हुआ था? A has to be less than or equal to 2. ये नहीं है ना. A has to be less than or equal to 2. Only possibility is x is equal to 1, a is equal to 0. ठीक है? Clear है? Anyone any doubt? So only thing which is enabling us to solve this question is that we are not afraid of taking variables. अगर मैं आपको बताऊं ना, ठीक है, वो क्योंकि स्टार्ट ही चाहिए रहता ना, we are not afraid of taking variables. At the same time, we want to reduce the number of variables for sure by going through the conditions. अदरवाइज क्या होता, मैं इसको x लेता, फिर y लेता, फिर एक और कंडीशन बनाता कि x plus y 3 होता. तो मैंने देख लिया ना कि दो नंबर का सम 3 हुआ है, तो इसको x ले दिया, तो इसको मैं 3 माइनस रख दिया, सो दैट नंबर ऑफ वेरिएबल को कम लो. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द वेरिएबल्स, बट एट द सेम टाइम आई एम वांटिंग टू कीप द नंबर ऑफ वेरिएबल ऑप्टिमल, सो दैट माय प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बहुत ज्यादा एलोंगेट ना. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका सेम है, उसमें बस क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पूछ दिया था, बाकी मेरे ख्याल से आंसर भैया. ये इसका लास्ट क्वेश्चन. This is the last question, guys. Everything is same. We have to find how many students were enrolled in both G and L. G and L में कितने enroll किए हैं? 7 minus A. 7 minus A, which comes out to be 6. Because हमने A की वैल्यू 1 आइडेंटिफाई कर ली. So question number 7 and 8 may be slightly difficult compared to the previous two questions, but one thing is sure, if we are just following what the conditions are given, we are easily managing to solve two questions. Question number 5 and 6, they didn't require anything drastic calculation, neither बहुत ज्यादा उसमें वेरिएबल का इंसर्शन नहीं था, तो सिंपल लॉजिक था ना, ये निकाला तो इस रेंज में आना चाहिए. उसके बाद we could have identified the answer for question number 5 and 6. Yes, for 7 and 8 I do agree कि ठीक है, थोड़ा और वो प्रोसेस को और आगे ले जाएंगे, then only we can identify the answer. But the good thing is that the entire conditions, यहाँ से यहाँ तक the entire condition for both the question is same. So there is an incentive also. If you can crack this, you can simultaneously solve both the questions. ठीक है ना? तो Sir,
बना हुआ है वेल्स। हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में बोथ जीएनएल में सर वो ऑल थ्री वाला वो क्यों नहीं लेंगे सर? क्लियर है ना, लेकिन वो तो जीरो है ना, मतलब ये दोनों को ले रहे हैं, बट ये है ही जीरो, वहां से सारे निकल गए, बाद में जीरो भी ऐड करोगे तो क्या होगा? यस ठीक है, दैट आई एग्री, मतलब टेक्निकली यू आर राइट कि मैं इसको क्यों आंसर कर रहा हूँ, बट बिकॉज क्योंकि ये जीरो है तो एनीवे these two together will effectively this, these two together is effectively this. सर, पर हमने जो क्वेश्चन की फोर्थ वाली स्टेटमेंट थी तो हमने उस टाइम पे नहीं लिया था वो वाला पार्ट। क्वेश्चन हमने के बस फोर्थ स्टेटमेंट जो थी के एंड एल वाला, फोर्थ क्वेश्चन में तो है उस the हाँ, numbers to enroll only in K is equal to number of student. enrolled in both K and L। हाँ ये था ना, only in K both K and L आता रहा है, देखो 4 + 5 is 9। मैंने क्या किया था पता है, यहाँ पे x था यहाँ पे y था, तो हमने इसको ना x + y ले लिया। हाँ ठीक है, यस सर। चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब कुछ डाउट वगैरह या कुछ इशू है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज वी आर डन विद द गुड एरियाज ऑफ वेन डायग्राम, जिसमें देखो मैक्सिमम वाला आता है लेकिन ज्यादा इस तरीके की चीजें आती है। ठीक है, द काइंड ऑफ सेट्स व्हिच वी हैव सीन राइट नाउ हैज मोर चांसेस ऑफ अपीयरिंग रादर देन द मैक्सिमम व्हिच एनीवे विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, एंड व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज हियर not only the logic of Venn diagram is applied, we have to work mathematically also, जिसमें कि इन इक्वेशन बनाना, उसका कंडीशंस लेना, मैक्सिमम मिनिमम लेना, वो सारी चीजें आ रही है। ठीक है, सो देयर इज वन मोर सेट, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट था, दैट्स व्हाई आई स्किप दैट, बिकॉज वो मतलब मुझे वो केस ही इतना बड़ा था कि मुझे केस एक्सप्लेन करने में ही काफी टाइम लगता, बट दैट इज हैविंग अ वीडियो एक्सप्लेनेशन इन दी दिस कोर्स, उसमें है, आप देख सकते हैं, बीईटी और कुछ करके था, लेकिन वो केस बहुत बड़ा था, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट। ठीक है, वो हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ट्राई करके देखिए, बट थोड़ा सा मतलब उसमें टाइम लगेगा काफी, बट ये दो क्वेश्चन को एक बार आप फिर से जरूर बना लो, जो भी सेट में ले रहा हूँ ना कैट वाले, उसमें देखो एक चीज तो है, देयर इज वन थिंग इन दिस काइंड ऑफ सेट इज दैट मे बी आफ्टर अ डे इफ यू ट्राई ऑन योर ओन एंड इफ यू हैव नॉट जस्ट mug up the answers, you still find some kind of challenge, so you have to overcome that challenge। ठीक है, वो जब बना लोगे ना और सही प्रोसेस को जब फॉलो करके बना लोगे तो दो चीजें इंश्योर होंगी, दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस एट द सेम टाइम सॉल्विंग एंड गेटिंग राइट आंसर फॉर कैट वाला सेट, ऑफ कोर्स अपने आप में ये कॉन्फिडेंस देता है। ठीक, और कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, वेन डायग्राम आई थिंक यू विल बी फाइंडिंग इन डेटा इंटरप्रिटेशन, एक डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस सेट्स करके दिया हुआ, उसके अंदर आपको मिलेगा, तो वहां पे जाके डिफिकल्ट वाले भी ट्राई कर सकते हो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू दैट, बट डू गो फॉर द इजी एंड मॉडरेट, उसको तो जरूर सॉल्व करो। ठीक है भाई, चलो कोई क्वेरी नहीं लग रही है तो आई एम जस्ट रैपिंग अप। मैं वो लिंक दे देता हूँ, अपन ने साथ वेबसाइट में डाला है, देता हूँ उसको, फिर मैं उसको एक बार ट्राई करके देखूँ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। क्लियर।